in the class. If the recording is on, it is easy to sleep in the class. है ना भाई? रिकॉर्डिंग होगा तो पढ़ लेंगे बाद में. क्या करना है क्लास में? जब सर बोले तो हाँ बोल देना माइक खोल के. नहीं, कैमरे में तो दिखता नहीं है कि क्या कर रहे हैं आप लोग. सो रहे हैं कि चाय पी रहे हैं कि घर में बातें कर रहे हैं लोगों से. ओके, solve the given LPP using graphical method. All right. The question is minimize z equal to, this is a good question, 3x1 plus 5x2 subject to minus 3x1 plus 4x2 less than equal to 12, 2x1 minus x2 greater than equal to minus 2, 2x1 plus 3x2 less than equal to 12, x1 less than equal to 4, x2 greater than equal to 2 and x1 x2 greater than equal to 0. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. मिनिमाइज z इक्वल टू 3x1 प्लस 5x2 subject to minus 3x1 plus 4x2 less than equal to 12, 2x1 minus x2 greater than equal to minus 2, 2x1 plus 3x2 less than equal to 12, x1 less than equal to 4, x2 greater than equal to 1. ठीक है? So this is the question. Now you try to listen everyone, be careful. What I am going to share here, that is very, very important. You just mind it that the right side of the value will never be a negative value. You cannot have minus 5 labor. You cannot say you have minus 5 hours of machine hours. You cannot have to say that we have minus 20 hours in a week. You cannot say. Is it possible to say? No, sir. No. So the right side constant must be positive because this is our limited resources. So we should make this equation when you write it in the final version. How to make it a positive sign? You just multiply with minus sign. So this will be minus 2x1 then plus x2 and this is less than equal to 2. Is it correct or not? Is it correct one? When you multiply with the minus sign, the inequality will change. Yes? Yes, sir. Okay. So now going to solve this problem. Change the inequality constants into an equation. So the first equation is, this is minus 3x1 plus 4x2 4x2 less than equal to 12. Then so this will be equal to, this is equal to 12 minus 3x1 plus 4x2 equal to 12. This is equation 1. Now the question is, what is the point here? Point of coordinates. What will be the coordinates? Who will tell me the coordinate points? This is x1, this is x2. What is the coordinate? Suppose I am putting this value here 0, then this will be 3. But we cannot put here 0 because when you put x2 0, x1 will be the negative sign. So it will goes to the third quadrant, but still you can have the coordinate, no issue. But to draw the line you can have no. Suppose I am putting this 0 here. What will be the value here? Minus 4, right? So in the second quadrant maybe this value will be, so this coordinate will help you to find the solution.
So for the sake of simplicity, you can also take any positive value. If you don't want to have a negative value, you can have some positive value. So when you take this uh, value that is greater than 12. Now suppose I am taking 4 here. So what will be this? Minus 3x1 equal to 12 minus 16. This will be equal to 4. So minus and x1 equal to 4 by 3. So this will be 4 by 3, or this is 1.33. Is it possible? Yes. No response. वंशिका बताइए. Vanshika, you are there? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Is it okay or not? Yes, Is it sir. okay or not? Fine. So now come to, so either you take this value or minimum 2 coordinate is required. Similarly, you can have the second equation, and that is minus 2x1 plus x2. This is equal to 2. This is equation number 2. We can have this again, the coordinate points, these coordinate points. This is x1 and this is x2. So when you put x1 0, x2 will be 2. When you take x2 equal to 4, suppose, then the what is the x1? 4 minus 2 minus 4 minus 2 divided by 2. This is 1. The positive value also you can take, or you can take the 0 value also. Then third quadrant is, third equation is, this is 2x1 plus 3x2 equal to 12. This is equation 3. Now you can have the coordinate points. This will be x1 and x2. x1 0, x2 4 is 0. This is 6. Third point. Then come to the fourth point. x1 equal to 4. This is equation number 3, 4, and x2 equal to 2. This is equation number 5. So we have 5 constraints. We can draw the line of the 5 constraints. So just see how this closed bound will be there. I'm just drawing the line here. See. This is your axis. This is x2. This is x1. This is 0. And then we can have here, what is the maximum point? 4, 6, 4, and 4. So 6 is maximum. So we can take a 1 point, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. This is 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Now I'm just drawing the line here. First line is, the coordinate is, first 0, 3, 0, 3, and 1.1, 1, 3, 4. So first I'm going to 0, 3, 0, 3. Where is 0, 3? Oh, 0, 3. So this is your first point. And what is the second point? Second point 1.114, 1.33, 1.334, 1.33 and 4. What is there? 1.33 and 4. Okay. 1.33 and 4. 1.33 and 4. So this is the point. I think this is the point.
I'm just going to draw the line. This is the line. This is equation number 1. Then similarly, equation 2 have 0, 2 and 1, 4, 0, 2, 1, 4, 0, 2. So I'm using this line 0, 2, 1, 4. 1, 4 means again this point. So 1, 4, this line. This is the line. It will go like this. This line, it will go like this. And then this will move like this. Okay. Then the third point will be 0, 4, 0, 4 and 6, 0. 0, 4 and 6, 0. This is the point. I'm just going to, this is the point. Yes, this is the third equation. This red is second equation. So this is your third equation. Then we come for x1 equal to 4. x1 equal to 4 is what? x1 equal to 4. This is x1 equal to 4. x1 equal to 4. This is the third equation, and x2 equal to 2. x2 equal to 2. This is the equation. Fine. This is x2 equal to 2. But actually is a very great thing that this black line will move like this. Black line will move like this. It will move like this. And then this line, red line, this will again move like this. So this kind of the diagram will we have. Here we can have this kind of line. ये स्केल से बनता ना तो थोड़ा सा अच्छा रहता ये वाली. So when you apply all the inequality constant, that is first is less than, then second is less than, it will be below this one with this line, right? Then the third equation is of less than, though this side, then this equation above this line, so of course this one, and this is of greater than sign, then this line. So your actual feasible result will be like this. This will be your feasible. Anyone have draw this line in a very perfect way? Can you draw on the scale? Can you draw this scale on the scale? Yes. Hello. Yeah, Bishwajit is there. Bishwajit. Yes, sir. Yes, sir. Have you draw this line? Please draw the line and give me the corner points, because the diagram was not good on this, but I'm trying to do that. You just tell me what are the corner points. Corner points. Then coordinates you have tell me what is the coordinates, and value of objective function. Value of objective function, that is z equal to 3x1 plus 5x2. 3x1 plus 5x2. Right? So coordinate is nothing but x1 and x2. What is your this coordinate points? You can have this coordinate point. This will be the A, this will be your B,
Then here C point will be there. I think this will be the C point. Then there you can have the D point also, or maybe some more point there. So please tell me the corner points. Who will tell me the corner points? You tell me the corner points. Excuse me, sir. Yeah, you can draw and then tell me. सर इसमें एक बार feasible region आप मार्क कर सकते हैं क्या? हाँ, फिजिबल रीजन ये वाला है, ये जो शेड किया है ना फिजिबल रीजन, ये वाला अंदर वाला जो ट्रायंगल बन रहा है ना, ट्रायंगल, ये वाला अच्छा। ये वाला फिजिबल रीजन आएगा जब आप शेड करके जो शेड किया हुआ है, शेड की बेस पे यही आएगा फिजिबल रीजन व्हेन यू ड्रॉ द लाइन। चेक करिए whether it is a feasible reason or not. सो जो थर्ड इक्वेशन थी 2x plus 3y वो लेस देन इक्वल टू 12 थी या ग्रेटर देन इक्वल टू 12? लेस देन। So then I guess उसके नीचे वाला आना चाहिए ना शायद। वो नीचे वाला ट्रायंगल आ रहा था। ये वाला आना चाहिए, ये वाला रुक जाओ बताता हूँ। ये वाला कह रहे हो? 0,2 ये yes, वाला ये वाला yes sir। शायद चेक कर लीजिए आप। हाँ, यू आर राइट, इट माइट बी। सर ये है तो आंसर 10 आ रहा है। आंसर 10 आ रहा नहीं, देखो पहला इक्वेशन है ना लेस देन 12 का पहला इक्वेशन। तो पहला इक्वेशन हमारा क्या है? ये वाली ब्लैक लाइन से थी ना, किससे थी? व्हाट इज योर फर्स्ट इक्वेशन? 0,3। तो 0,3 का मतलब ये वाली लाइन है ना, इसके नीचे आ जाएगी। ठीक है, मान लिया है ना, ये आ जाएगा। चलो इसके नीचे आ जाएंगे। फिर दूसरा इक्वेशन हमारा है, इसको भी लेस देन कर दिया था मैंने चेंज करके। सो इससे हमारा क्या आया था? सेकेंड इक्वेशन -2x1 + x2 = 2। सो 0, 2 and 1, 4 यही था ना, 0, 2 and 1, 4 ये था ब्लैक वाली लाइन। और ये भी लेस देन साइन है तो इसके नीचे आ जाएगा। ये रेड वाली से नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है। थर्ड इक्वेशन इज 0, 4 and 6, 0, 0, 4 and 6, 0। yes, this is the line, correct one. So this will be this will vanish and this will come. Then this is less than, that means this side this will append, this side means already we have, and this is upper side means this already. Yes, this is your feasible reason, correct one, correct one. So your feasible reason A, B, maybe 2 points, and C and so on. So this will be the feasible reason and then you tell me the value. लेकिन मैं एक सॉफ्टवेयर है, मैं इसको सॉफ्टवेयर पे चला के देखता हूँ, आपकी सारी कांस्टेंट की वैल्यू देखते हैं। सर वही सर डेस्मोस पे ड्रॉ करके तो सर वैल्यूज आ रही है एग्जैक्ट। अच्छा, डेस्मोस पे? यस सर। डेस्मोस पे ग्राफ थोड़ी दिखा रहा है सर, ग्राफ दिखाता है सर उसमें। तो चेक करिए ना सर। एक पॉइंट आ रहा है 3,2। हाँ, एक पॉइंट है एक मिनट सर 0,2। बहुत सारे आ रहे हैं क्या? नहीं सर, 3 पॉइंट आएंगे ना अपने ट्राइंगल में, 3 ही पॉइंट्स हैं तो 3 पॉइंट्स हो जाएंगे वो ABC। कॉर्नर पॉइंट बता रहा है ना? यस सर, कॉर्नर पॉइंट से बता रहा हूँ मैं। ठीक है, एक मिनट, एक सेकंड रुकिए, मैं प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। कितने? ओके सर। 4 इक्वेशन है ना? कितने कांस्टेंट है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 है। 5 कांस्टेंट्स हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन कितना है? 3। फिर मैं शेयर करता हूँ ये सॉफ्टवेयर आपको। 5 देन -3 देन +4, दिस इज लेस देन 12,
ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों से। देखिए स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, है ना। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। देन मैं शो करूँगा आपको। ये क्या आ रहा है, ये वीडियो कहाँ से आ रहा है इसमें? क्या हुआ सार्थक, कहाँ यस सर। पे हो आप? कहाँ पे हो? ये वीडियो कहाँ से दिखा रहे हो? ओह शिट, हैं? सॉरी सर, गलती से ऑन हो गया। सर क्लास में है, थोड़ी देर बात करें। सॉरी सर, सॉरी। हैं? अच्छा, कोई जंगल में बैठे हो? हॉस्टल में बैठा था सर, बाहर बेंच पे। कहाँ पे? बेंच पे बाहर। हॉस्टल में? हाँ। अच्छा है। दिस इज -3, then 2, then 2 and then -1, this is greater than। आपको शेयर हो रहा है स्क्रीन ना? ग्रेटर देन कितनी वैल्यू है? Yes, sir. -2, देन क्या है 2x1, देन +3x2, दिस इज लेस देन 12, देन थर्ड इज x1, 0x2 लेस देन इक्वल टू 4, 0x1 प्लस 1x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 2। ठीक है, चेक करो प्रॉब्लम। 3 5 -3 4 लेस देन 12, 2 -1 ग्रेटर देन -2, 2 3 लेस देन 12, 1 लेस देन 4, 2 लेस देन x2 लेस देन greater than 12, 2। okay, so this finish, and then we are going for the, this is your problem. The current procedure is finished. Please go to the procedure menu to continue. So just I'm going the graphical method now. So graphical method is going on. Why it is there? अरे बाबा, प्रॉब्लम तो सॉल्व किया था, अच्छा फिर से एंट्री कर रखा है यहाँ पे। इसी को क्यों नहीं सॉल्व कर सकते? एक सेकेंड, इसको सेव कर लें, इसको सेव कर लेते पहले। फिनिश किया, इसको सेव कर लेते हैं। ये है Q1 के नाम से सेव किया। गो टू दिस, ओपन फाइल Q1 एंड देन गो देयर, राइट। सो ये ग्राफिकल में इंटरेक्टिव बाय द ग्राफिकल में फिर से एंट्री करनी पड़ेगी। दिस इज मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम देखिए यहाँ पे मिनिमम 3x1 5x2, चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कांस्टेंट में -3, कितना टाइम लगेगा इसमें? -3 एंड 4x2 एंड दिस इज लेस देन 12, कोई बात नहीं। उसके बाद ऐड करते हैं कांस्टेंट, दूसरा कांस्टेंट हो जाएगा हमारा क्या है 2, देन -1 and this is less than 12. now add it। यहाँ पे देखिए साइड में कांस्टेंट ऐड होता जा रहा है, चेक करते जाइए। 2 and -3 less than 12, 12, this is not 12। देखो यहाँ पे गड़बड़ हो गया ना, आप लोगों ने बताया नहीं तो गड़बड़ हो गया। 2, this is -1 and this is greater than sign and this is -2 ऐड करते हैं। फिर उसके बाद है 2, then 3, then this is less than 12, then ऐड करते हैं।
देखिएगा, चेक करते रहिए यहाँ पे आप लोग। नेक्स्ट इक्वेशन इज 1x1 plus 0x2 is less than 4, and then I'm adding it, this 0x1 plus x2 is greater than 2, Sir, right? first Yeah, equation is -3 plus 4x. अच्छा नहीं, okay. Sorry. -3 है ना? ओके, ये क्या चीज़ है? गलत लिख दिया क्या मैंने? हाँ, Sir, गलत है। first equation was -3 Yes, x1 yes, plus yes, 4x2. yes, yes, yes. इसमें चेंज करना है, मुश्किल है, इसको ग्राफिकल से सॉल्व करना है। बहुत दिक्कत इसमें हो जाती है सॉल्व फटाक से। टाइम खराब हो रहा है ना। सर डेस्मोस पे हो जाएगा जल्दी से। इसलिए मैं कहता हूँ आप लोग मैच करते रहिए। मिनिमम z इक्वल टू 3 + 5, देन कांस्टेंट में आ रहे हैं हम, दिस इज -3, देन +4 इज लेस दैन 12। चेक करिए सही है, यस सर। ये ऐड किया, आ गया ना। दूसरा इक्वेशन 2 - 1 greater than -12, is it correct? Check. -2। -2, ओके, -2, ठीक है। अब ठीक है, देन सेकेंड थर्ड इक्वेशन देखो बनता जाएगा यहाँ पे। देन दिस इज 2 + 3 is less than 12। ये कंफ्यूजिंग इक्वेशन है सर बहुत। लेस देन 12। हाँ, लेस देन। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन। देखिए आ गया। अब एक और ले लेते हैं, x1 एंड दिस इज 0x2 एंड दिस इज इक्वल टू 4, है ना। इसको ऐड कर देते हैं एंड ये हो जाएगा 1 एंड दिस इज ग्रेटर देन कितना है यहाँ पे 4 2 सॉरी 2। सो इसको ऐड कर दिया, देखिए हो गया ना। सो दिस इज योर फिजिबल रीजन। हम लोग कहीं और देख रहे थे, हम लोग कौन सा देख रहे थे फिजिबल रीजन, यहाँ देखा, फिर बाद में ये देखा। जब तक ग्राफ नहीं ड्रॉ करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा हमें, है ना। आर यू गेटिंग दिस? यस सर। अब देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे, देखिए स्क्रीन पे, जस्ट आई एम ट्राइंग टू सॉल्व। देखिए एक तरीका होता है सॉल्व करने का, एंड देन इट विल गिव द ऑप्टिमम सॉल्यूशन। इज इट गिविंग द ऑप्टिमम सॉल्यूशन एट दिस कॉर्नर पॉइंट? व्हाई? एक तरीका ये होता है, यू नो दिस इज द रेड लाइन एंड दिस रेड लाइन इज द इक्वेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। आप चेक कर लीजिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, x में जैसे 3x1 + 5x2 है ना, यहाँ पे कहीं भी पॉइंट ले लेंगे, दिस विल गिव द सेम पॉइंट 3 and 4। सो व्हेन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन विल मूव like this, it will move like this, and then it will move to the point at this feasible region, and it will stop at that point where it will get the optimum solution. So at this corner point the solution is optimal. Fine. So what is the solution? A solution is, here it is given xz equal to -10, but actually I have solution z equal to 19. So what is the wrong with this? Minimum z equal to 3 + 5 -3 + 4 less than 12, 2 minus x2 greater than -2, 2x1 + 3x2 less than 12, x1 less than 12, x2 greater than equal to 2. So this is the Sir, it should be solution. z equal to 4. Sorry, z equal to 10, right? Yeah, actually it is the minimization case. So z is minimum sign, right, with the negative sign. We can convert. Later on I will tell you how the minimization can be solved with the maximum case.
and this will be will give the answer, right? So the minus sign indicate that this is the case of minimization problem, because the cost is given. So minus 10 means actually that we have to minimizing the 10 rupees cost. Getting my point? Yes, sir. So this, you know, sensitivity analysis. What is sensitivity analysis? No. So this is the value. Sensitivity analysis means it is changing the points, and it can check is there any variability in the solution or not. Can we have the more value, more solution like that, which is close to optimal, right? So this is the graphical way that you can solve it. Now see the same problem interactive way by this method also, that we can solve this question by interactive way, one by one it will solve it. So no issue. So where it has gone? It has gone. I don't know. Okay. So now come to the problem. Where is this? Where is my sheet? So come to the whiteboard. Where is the whiteboard? Whiteboard. So you try to solve this question. You try by yourself by drawing the graph, and you'll find what is actually the answer is, right? You can find it. So may I give some question for practice for the mixed problem? Yes. 12 people. Again, 1 people joined right now. Sarthak, again he joined today very late. Sorry, Sarthak. sir. Yes, sir. Yeah, you have joined right now, na? No, sir. So I was in the meeting from past 20 minutes. I can Why? send you the screenshot as well. No, you should be in the class. No, Vanshika Mordani was there in the class. Well, yeah, actually you joined late. I just remark it. I joined late. Devanshi? Yes, sir. Actually, I'm Yeah. using Ion's Wi-Fi, so maybe there are some connectivity issues. Okay, so I will take the attendance. If you will come in the class in the first 10 minutes, then I will consider the attendance, otherwise not. So please consider my attendance for today. From tomorrow, tomorrow onwards, I'll attend the class in the first 10 minutes. Every second day it will come the tomorrow. So I will wait. Every No, next day is a tomorrow day. Every next day is tomorrow. So the tomorrow never come. yes, I get your point, sir, but So write the question. 300x1 plus. Be comfortable in my class, but you must attend the class. Otherwise, you'll feel difficult later on when you go. So x1 plus 4x2, this less than equal to 200. And my technique of teaching in the class is that every day I am teaching is a new thing. 3x1 plus 5x2 less than equal to 150. 5x1 plus 4x2 greater than equal to 100. 8x1 plus 4x2 greater than equal to 80, and x1 x2 greater than equal to 0. This is the one question. Okay. Question number 2. This is for all homework. Maximize z equal to 80x1 plus 120x2. Pardon? सर टाइम बहुत ओवर हो गया, रोक दीजिए सर. क्वेश्चन तो लिख दे बस. x1 plus ठीक है सर. x2 less than equal to 9, x1 greater than equal to 2, x2 greater than equal to 3. बस 1 मिनट की बात है. जी सर. 20x1 plus 50x2 less than equal to 360, and x1 x2 greater than equal to 0. ये दो क्वेश्चन सॉल्व करके कल मैं पूछूंगा आप लोगों से, तब उसके बाद हम ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व कराएंगे.
अभी भी क्वेश्चन है कुछ में, कल मैं स्पेशल केसेस कराऊंगा, दैट इज आल्सो ए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, स्पेशल केसेस कल कराऊंगा मैं, तो मतलब नेक्स्ट क्लास. सो यू डू दिस ऑल टू क्वेश्चंस on the next class we'll discuss. Okay, should I stop now?